Hi, morning. Just unmute everybody so that you can unmute yourself. So there's this textbook that I'm trying to download. So वैसे हो ही नहीं रहा है. So I'll just wait for like 2 minutes. Okay. Ma'am, instead of downloading, you can just view it online, right? Is it वो a उधर ही open नहीं textbook हो रहा है. PDF? That's Okay, what ma'am. it's not Okay, ma'am. it even opening in the textbook वाला. इसका CN actually है ready. It's not in the final PDF form, but the intern has done it. So let me see if I can use that. So on Saturdays, you guys don't have school or what? No. No, ma'am. Acha. Jaa Simpson. Basically, if it opens here, it's fine. All right. By the time this is opening, let it open. Okay, so today's chapter is human reproduction. In fact, this chapter is very important, especially given the situation in India where people really need to understand not just the process of human reproduction, क्योंकि वो तो सबको बहुत आता है क्योंकि इतना ज़्यादा population है. It's the it's the evidence that people know how to do reproduction, but there are so many other things associated with that people either they are not aware of it or they have some misinformation or something, and that's the reason India unfortunately, like if you see the mortality rate of fetuses, or even the mortality rate of mothers delivering a baby is very high in India as compared to the other developing countries. So that's a very sad part, because then still we are struggling with the basic understanding of कैसे delivery होना है, कैसे अच्छे से you have to make sure that the baby is safe, that the mother is safe. And I don't know how familiar you guys are with all these advertisements that government puts on, mostly it's on DD, जहाँ पे they show कि अस्पताल जाएं, like you need to, that's where it starts, like you need to tell people that it's, I mean, obviously you can do the delivery at home, but there's a lot of chance that the that the female would get some kind of a disease, or probably she'll just bleed to death. So these are the very basic things that people are not aware. And that's the reason, obviously. So what I will do is I will we'll be doing this chapter. ये chapter थोड़ा देर तक चलेगा अपना. Today I'll be just covering the male reproductive, female reproductive system. That's it. We won't be going into the whole process of reproduction. पहले से उसके systems करेंगे. And maybe in another 2-3 sessions we'll finish this chapter. But in that, I'm going to include a lot of information which is not only for your NEET and your board exams,
but also your information which is important in general. Is my voice clear? Yeah. Because it's clear, no? Because I just got this saying that you may be experiencing degraded Your audio. voice is clear, but your video is in slow motion. है ना? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है ना? Fine, let me just check. Is it better now, by any chance? Yes, ma'am. Is better? Okay, awesome. Okay, all right. अब क्या करें यार, इसका तो टेक्स्ट बुक ही नहीं खुल रहा है. Let me just I'm just putting off my camera and listening for a bit. Give me like 2-3 minutes. Let me just figure it out and I will start. So till then, if you have if you have the textbook with you, don't read the textbook. What I want you to do is I want you to think of what can be the different stages, important stages in the process of reproduction. Okay. So ये answer सोच के रखो. After once I come back, I will ask you to write it down. Okay. Okay, I'm back. ठीक है. Just raise your hands if you can see me, hear me clearly, can see the shared screen and everything. Okay, awesome. All right. So coming back to my question, can you tell me what are the different stages of reproduction? What can be the different stages of reproduction?
Okay, fine. So you can also give me oral answers. मैंने तुम लोग को already audio का ये तो दिया हुआ ही है. Okay, so Jasleen has said formation of gametes. What is the name that we say for formation of gametes? So सबसे पहले तो क्या बोलते हैं? Gametogenesis, right? Very good. So gametogenesis is nothing but formation of gametes in each of the male and female humans that we are talking about. उसके बाद आता है transfer of sperms. Very good. So transfer of sperms को क्या बोलते हैं? Insemination, है ना? Insemination आपने सुना रहेगा, artificial insemination वगैरह आपने सुना रहेगा. तो आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है कि अगर कोई स्पर्म डोनर है और उसको वो ये करना है, अगर डोनेट करना है और वो फिर आर्टिफिशियली किसी फीमेल में ट्रांसफर करते हैं, बिकॉज सी प्रॉब्ली सम मेल्स आर नॉट एबल टू डू इट. सो इंसेमिनेशन नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. आफ्टर दैट व्हाट विल कम? फर्टिलाइजेशन, है ना? फर्टिलाइजेशन इज एक्चुअली, अभी देखो इंसेमिनेशन तो होता ही है, लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंसेमिनेशन कई बार होता है बट जरूरी नहीं हर बार फर्टिलाइजेशन हो. ओके, बिकॉज फर्टिलाइजेशन इज अ वेरी चांस इवेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जहां पे फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज हैपनिंग वेयर मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर एक्चुअली गोइंग टू यूनाइट एंड गोइंग टू फॉर्म अ जाइगोट, राइट? उसके बाद क्या आता है? उसके बाद जैसे ही वो जाइगोट बनेगा, now that zygote is going to turn into an embryo will turn into a blastocyst. So blastocyst is that एक ball of cells एक है, a bunch, it actually looks like grapes, and that comes and it attaches to the uterine wall. तो ये जो fertilization है आपका, ये fallopian tube में हो रहा है और नीचे आके वो attach हो जाता है, that is called as implantation. Okay, so yeah, Aryan, you're very right, implantation is very important, क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, बट इम्प्लांटेशन अगर नहीं हुआ तो स्टिल देयर इज अ चांस ऑफ मिसकैरेज, देयर इज स्टिल अ चांस ऑफ अबॉर्शन. तो अबॉर्शन जब भी लोग करते हैं, not necessarily every time it has to be a surgical abortion, they just even if let's say female gets pregnant because of unprotected sex that she has, they give these pills. Okay, तो pills से क्या होता है, वो obviously she gets the periods and implantation रुक जाता है, and that's how it just removes that whole thing out. But obviously implantation की stage कौन सी stage पे, that also matters that way. And finally once the implantation is done, then for over a period of 8 to 9 months पूरा development होता है वो embryo का, blastocyst का, into a full grown fetus, that is called as gestation, है ना? तो gestation period is also the most important period, क्योंकि उसमें सारे changes आते हैं, उसमें पता चलता है कि बच्चे का sex क्या है, is it going to be a male or a female. Actually you can see the morphological changes in the baby, right? And finally parturition is nothing but a delivery, right? So parturition और micturiation, ये दो words आपने पहले सुने रहेंगे. Micturiation जो होता है, which is nothing but urine passage, is called as micturition, and parturition is nothing but passage of the delivery of the fetus or delivery of the baby. Okay. I really think there was a case where implantation somehow happened on the small intestine wall due to a recent genital operation in the mother. Yeah. So ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे problems होते हैं that we will see about what are the what are the problems that can happen in this whole process of reproduction, because see, it is a complicated process, right? It is not as easy as it seems. Although people get pregnant left, right and center in India, it's not really and it's the irony is the people who want to get pregnant probably don't, because of that whole pressure. And see, your body identifies if you are under stress. Okay, have you seen that movie? बहुत ही ऐसे बकवासी movie आई थी recently, Good News करके. I was just so bored at home, so I watched it on Netflix or some Prime or something. And yeah, so basically it talks. Huh? Sorry, it was horrific. I know. The storyline is like messed up. I don't know. Yeah, but I mean, see, but I appreciate the fact that at least now people are making movies on this concept. विकी डोनर सबसे पहले आई थी, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे movies आई, so these are the concepts of IVF and all that. So people who are not are not the couples who are not able to conceive, they need to go for these certain kind of treatments, etc. But on the other hand, if you see the poor people or the people who are in they are like really not in the good economic state,
वहां पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। कभी तुमने सुना है कि कोई ऐसे मेड हो जाती है आईवीएफ के लिए, उनके तो 5-5 6-6 बच्चे हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं, राइट? सो दैट्स द आयरनी ऑफ इट, बिकॉज नाउ वी कैन नॉट से इट डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिशन, इट डिपेंड्स ऑन hygiene, it depends on this, it depends on that. It's all about your mental state and how your body is reacting to it. And yeah, I mean, I don't know, it's weird. I know it's nature mein bahut baar, even doctors, I have heard doctors, because one of my friends, she is she's a very she has her own hospital and the whole of this thing for IVF. Her husband is also ये है MD Obgyn. So all of that, and they have extensive research going on IVF, and I was just talking to her. So she's like, people don't understand that how this whole process works, obviously. तो stress का कितना importance है इस पे, वो लोगों को समझ में नहीं आता। जितना तुम ज्यादा स्ट्रेस लोगे, उतना ही डिले हो जाता है प्रेगनेंसी, उतना ही प्रॉब्लम्स आते हैं प्रेगनेंसी में। व्हाई? आई डोंट नो, पहले के जमाने में लोग ऐसे बोलते थे कि अच्छी अच्छी चीजें देखो, if you're getting pregnant, because it affects the baby and all that, and people are like, हाँ, what rubbish, ऐसे थोड़ी होता है। But it does make some sort of sense, because the mother's mentality and the mother's state of mind definitely affects the kid also. Okay, all right. Yeah, so coming to this thing, so just quickly write down, today you might have to note down certain things. So सबसे पहले लिखो stages of reproduction. सबसे पहले आएगा gametogenesis. Gametogenesis के आगे लिख दो formation of gametes. Second क्या आएगा? Insemination. Insemination is nothing but transfer of sperms into the female genital tract. Third is fertilization, which happens in the female genital tract only, especially in the fallopian tube, है ना? So obviously we'll be learning about all these parts in detail. Then comes the implantation. Implantation is nothing but attachment of the growing embryo to the uterine wall, endometrium. नेक्स्ट कम्स जेस्टेशन. अगर इम्प्लांटेशन ढंग का हो गया, अच्छे से हो गया, तो 9 महीने तक जेस्टेशन होगा, और जेस्टेशन के बाद फाइनली देयर विल बी पार्चुरेशन, है ना? सो दीज आर बेसिकली 6 stages that you have to mention. I'm just giving you 1 minute, quickly write it down in your notebook, and once you write it, so this is what I do even with the lower grade kids. जैसे लिख के हो जाता है, वो फोटो खींच के भेज देते हैं ग्रुप पे, ताकि I know that you have written it. तो अभी लिख लो और उसका फोटो खींच के, या तो you can send on our unofficial group or official group, wherever you want. तो उसको भेज दो, एंड देन वी कैन मूव इट अहेड, बिकॉज फिर वो बाद में लिखेंगे तो वो कभी होगा नहीं। ओके, जिसने भेज दिया, गुड। आ गया। चलो चलो जल्दी भेजो, कितना सा टाइम? ओके, वेरी गुड।
बाकी के लोग किधर गए? एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं। Okay, Aryan has sent. Okay. किधर गए बाकी के लोग? जल्दी करो, कितना टाइम लगता है लिखने में? Are you guys attending it on phone? Your this thing, go to webinar. अनन्या का भी आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। I'm type I'm typing the thing. वो तुम्हारा नोटबुक का इशू है ना? क्यों बाबा ऐसे? कहीं से तो लेके आओ चुरा के। ओके चलो ठीक है, ओके लिख के भेज देना। अगर अभी नहीं लिख रहे हो तो इट्स ओके, क्योंकि यू नो अदरवाइज फिर बहुत टाइम जाएगा। जल्दी जल्दी करो, एक इन अनदर 1 मिनट आई वांट एवरीथिंग। ओके, आर्य गोरवलकर हैज सेंड, आमला पाठक हैज सेंड। हु एल्स इज पेंडिंग? आई थिंक सिद्धार्थ का बाकी है। रिया है क्या आज क्लास में? रिया मुझे दिख नहीं रही, आई नहीं क्या? लिख रहा हूँ। ओके रिया, ओके all right, so yeah, so by the time Siddharth will send this, so now you know that there are these 6 stages of reproduction. So obviously first it starts with gametogenesis. तो gametogenesis कैसे होता है, कहाँ होता है, और उसके बाद insemination कैसे होगा? तो ये दो चीजों को देखने के लिए we need to understand that how the reproductive system is. ओके तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, उसमें क्या ऐसे सेल्स हैं, क्या ऐसे पार्ट्स हैं जिसकी वजह से ये पॉसिबल होता है, right? Now see, I mean obviously you guys are not like totally unaware of the, you know, unaware of what are the parts, because you studied it in you know grade 10th also, plus whatever general knowledge that you have. But here we are going to talk about that what are the exact you know, what is the exact process, and you know how efficient it is, right? Because yeah, you know that's very important, क्योंकि efficiency के ऊपर ही ये पूरा आगे का प्रोसेस डिपेंड करता है, फर्टिलाइजेशन का और you know gestation का वगैरह, right? So even the changes that we are talking about, that you know that come in males and females, you know males में जो आता है that you know they become a little strong, in the sense muscles and all develop, you know hair grows in different parts. Similarly, you know the reproductive system, the penis also becomes stronger as they grow and as they reach the puberty. Same thing in females, you know the breasts will develop, they become curvier. अभी वो क्यों होता है? बिकॉज वो पेल्विक गर्डल का ये होना इम्पोर्टेंट है, ताकि जब डिलीवरी होती है पार्चुलेशन के वक्त, इट रियली हेल्प्स, क्योंकि वाइडर द हिप्स आर बेटर द डिलीवरी इज. So all these things, and obviously again the growth of hair in certain parts, especially in the genital area, because it you know it requires certain extra protection because it is so important. So ये सारी जो चीजें हैं, okay, that we are going to see in detail,
Yeah, and at any point if you have any doubts, don't think यार मैं मैम को किसी डाउट पूछूं ये, but I think this is the best platform where you can ask all sorts of doubt, and especially at your age where there is so much of wrong information available on the internet, it becomes really chaotic, right? I mean, I have seen people whenever I used to teach this chapter, even in grade 12, people used to come up with certain questions, and I was so glad that I clarified it. नहीं तो कहीं जाके कुछ कर देते ये बच्चे, because they were at that age, that you're getting all grown up and you're getting attracted to the opposite sex and you want to try things, and some people just get stupid and do something and end up in a big trouble, right? So yeah, at any point if you want to ask any question, you are most welcome. Either you can ask in our open forum, or you can ask me privately. It's up to you. All right, so let's begin. Now here it's not the ladies first, here we want to do the males first. So we want to start with the male reproductive system. Yeah, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले तो टेस्टिस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो दे आर प्रेजेंट इन पेयर. सो टेस्टिस जो रहते हैं वो हम होते हैं, दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, right? So can you tell me why it must be outside the abdominal cavity? Any idea? It requires a lower temperature for spermatogenesis, right? Yeah, Like correct. 2 So degrees lower than basically, the body temperature. correct. So 2.5 degrees lower. It is not like एकदम से thermometer लेके ऐसे measure करने की जरूरत नहीं है. And it so happens that whenever the baby is developing in the womb, तो मान लो बेबी बॉय है which going to उसका बॉडी जब भी फॉर्म होता है, तो स्टार्टिंग में जो टेस्टिस बनते हैं ना वो किडनीज के पीछे होते हैं. ओके, और जैसे जैसे वो बॉडी डेवलप होता है वो बॉडी के बाहर आ जाते हैं एक बैग में, एंड दैट बैग इज कॉल्ड एज स्क्रोटम. तो हमेशा से जैसे ही जब भी टेस्टिस बनते हैं कभी वो बाहर नहीं बनते. सो दिस इज समथिंग दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, दैट दे आर फॉर्म्ड इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी नेक्स्ट टू द nearby to the kidneys, and they descend. So they are descended outside outside the body of a male, and that's why they grow in that bag. तो वो जो bag भी बना हुआ है, अगर obviously females would not know this, obviously boys know how it happens, that in winter season this scrotum it kind of it has the capacity of contraction and relaxation. वो जो bag है, pouch है जिसके अंदर testes है, so it is capable of contraction relaxation. तो अगर मान लो winter season है तो already temperature बहुत low है बाहर, तो वो एडजस्ट करके थोड़ा एब्डोमिनल कैविटी के नजदीक चला जाता है. It literally goes up a little bit next to the abdominal cavity. Whereas in the summer season, like this season, it literally hangs down a bit, okay, because so that now it's already so hot, it needs that lower temperature. So that way. So 2 to 2.5 degrees जो बोला है, it's like an approximate thing. Obviously, it varies from person to person. Also, the size of the testes varies from person to person. Yeah, so it is not like a standard thing कि अरे हाँ यही होता है, ऐसे ही होना चाहिए. So it all depends on this thing. Yeah. Ma'am, Yeah, what happens? हाँ बोलो. Like if in an abnormality, if the scrotum is not formed properly, and then the testes aren't really like outside the main body, then how do you sort that out? Yeah, so they have a surgery for that. So they have to while surgically they have to descend, they have to bring it out. So बहुत बार, in fact, this is a very common not very common also, but yeah, it is pretty common that this kind of thing, that the testes have not descended properly during development, और अगर वो scrotum form नहीं हुआ या तो फिर वो testes अंदर ही अटक गए, तो फिर obviously that person will not be able to produce sperms. तो फिर वो surgically वो करवाना पड़ता है उससे. Yeah, so that's what happens, if it doesn't descend outside. Yeah, but this problem has to be identified right at the beginning, है ना? मतलब जैसे by after the birth in itself, अगर ऐसे होता है तो usually अगर ऐसे operations होते हैं तो now obviously when it's a baby, but थोड़ा बढ़ने के बाद, थोड़ा ये होने के बाद they do it, because yeah, it can be a big problem otherwise. If the AC wanted contract again, yeah, obviously. तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है ना. अब उसको थोड़ी पता है टेस्टिस को एसी लगाया है या तुम हिमाचल में बैठे हो या क्या कर रहे हो, उसको टेम्परेचर जैसे है वो वैसे एडजस्ट करेगा. इट डजंट मैटर. हाय रिया, हाय. क्यों इतना लेट हो गए, नाश्ता बना रहे थे क्या? ऑलराइट, चलो. सो टेस्टिस हो गया सबसे पहले. अच्छा, यू आर हैविंग नाइट इश्यूज, नो प्रॉब्लम. Okay, so testes are situated in the they are located outside, just outside the abdominal cavity. They are present in a pouch called as scrotum, and since it maintains a lower temperature for the spermatogenesis, right, and the scrotum can now contract and relax depending on what is the temperature required. ठीक है.
अभी टेस्टिस को अगर हम उसको कट कर, ठीक है, अगर हम उसका एक सेक्शन करते हैं तो अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स मिलेंगे एंड दीज आर नथिंग बट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट. तो टेस्टिबुलर लोब्यूल्स होते हैं. तो टेस्टिस में टेस्टिबुलर लोब्यूल इज नथिंग बट व्हाट, it's nothing but these small compartments. There are around 250 compartments which are present inside the testes, और हर एक compartment के अंदर there are these seminiferous tubules. So seminiferous is, देखो सीमेन के जैसे साउंड कर रहा है ना, तो seminiferous is nothing but also these are the tubules that are actually going to make the sperms, है ना. तो spermatogenesis इसमें ही आने वाला है. तो इनमें भी there are two types of cells which are there. One are the male germ cells which are actually going to produce the male gametes or the sperms, and there are Sertoli cells are also there. So Sertoli cells are the ones that are going to provide the nutrition, है ना. तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे जिसमें जिनसे उनको sperms develop होंगे and all of that, right? Okay, so I just wanted to write down the heading male reproductive system. उसके नीचे लिख दो सबसे पहला point is testis. Testes are what, they are present in pair, okay, and also basically they are present outside the abdominal cavity. Let me just see अगर यहाँ पे लिखा होता है, you can just copy it down from here. Yeah. Yeah, so they are oval in shape. They are 4 to 5 centimeters length होता है, और width होता है 2 to 3 centimeters, and they are covered by dense covering. It's nothing but the scrotum. Okay, so Aryan Gotha is asking me, so the germ cells are like sporogenous tissue and Sertoli cells are like tapetum. You can say that. Yeah. You can draw a lot of parallels when we are studying this. Yeah. Okay. ठीक है, so लिख दो इसके नीचे ये सारे जो पॉइंट्स है ना. So each testis are going to have about 250 testicular lobules, है ना. तो टेस्टिस, बहुत सारे ये वर्ड्स तुमको नए नए सीखने मिलेंगे इसमें से. So सबसे पहले आता है तुम्हारा टेस्टिस. टेस्टिस के अंदर आता है टेस्टिकुलर लोब्यूल, जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है. वो कंपार्टमेंट के अंदर, एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो टाइप के सेल्स है. एक जो आपका जर्म सेल है जिसमें से बेसिकली मियोटिक डिवीजन से आपका स्पर्म्स बनेंगे, और दूसरे से वो सर्टोली सेल है. दे व्हाइल दिस इज हैपनिंग, दे नीड सम फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द जर्म सेल्स. तो दीस टू सेल्स आर प्रेजेंट इन द, तो ये देखो तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना, द टेस्टिस आर एबल टू प्रोड्यूस टू थिंग्स. वन आर द स्पर्म्स एंड सेकंड इज द एंड्रोजेंस और द टेस्टोस्टेरोन एंड ऑल ऑफ दैट. तो अभी हम लोग ने यहाँ पे एक सेल जो देख लिया, हमारे मेल जर्म सेल्स थे, they are going to be responsible for the sperm production. Whereas अभी दूसरे टाइप के जो सेल्स होते हैं, they are present in the interstitial this thing. Let me just show you a picture. Yeah, can you see the picture, all of you? Okay. Yeah, so देखते हैं ये कैसा होता है. तो देखो ये तुम्हारे अंदर का ये जो छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट्स तुमको दिख रहे हैं, okay, these are nothing but the spermatogenic cells. So these most of them they are divide करते 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 इनके sperms बन रहे हैं नीचे, है ना. तो spermatogenic cells जो हैं, these are nothing but your male germ cells. तो पहले वो diploid होते हैं, diploid से meiosis होने के बाद haploid बनेंगे, और then we have these early spermatogenesis. तो उनमें भी changes आता है ना, क्योंकि you have seen that sperm looks in a very, it has a very distinct kind of a structure, है ना, कि एक उसका हेड है, मिडिल पीस है, फिर टेल है, ये सारी चीजें हैं. तो इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल ओवल सेल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो वो स्टार्ट होता है वैसे और एंड में बन जाता है ये स्पर्मेटोजोआ, और वी कॉल देम और स्पर्म सेल्स आल्सो. तो दिस हैपेंस इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना. तो वो कैसे ज्वाइन होगा बाद में वो हम देखेंगे, रेडिएटेस्टिस से और वगैरह, वासा एफरेंशिया एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये वहां पे जाता है. एंड यहाँ पे आप देखोगे तो इन द इंटरस्टिशियल थिंग, कैन यू सी दिस पर्पल कलर थिंग वेयर इज अ लॉट ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड ऑल ऑफ दैट. तो यहाँ पे होते हैं लेडिक सेल्स. सो लेडिक सेल्स में से आपके सब हार्मोन्स, एंड्रोजेंस निकलेंगे. तो आपके टेस्टिस के अंदर ही दो टिश्यूज है. अंदर वाला जो पूरा कंपार्टमेंट है दैट इज ऑल योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और जो बाहर वाला जो कंपार्टमेंट है विच इज द इंटरस्टिशियल टिश्यू, जहाँ पे आपके लेडिक सेल्स होते हैं, वहां से टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. सो ये अलग दो अलग टाइप के सेल है दैट वी आर लुकिंग एट.
Okay, yeah. Okay, so now let's go back to the scene. All right, so each testis has about 250 testicular lobules. Each tubule has 1 to 3 seminiferous tubules where sperms are produced. Each seminiferous tubule has male germ cells and Sertoli cells. Male germ cells undergo meiotic divisions leading to sperm formation, whereas Sertoli cells provide nutrition to germ cells. The regions outside the seminiferous tubules, है ना, उनके बाहर ही था वो purple color का मैंने दिखाया. Those are nothing but the interstitial layer or the Leydig cells. Leydig cells are going to secrete the androgen. Okay, अभी ना यहाँ पे even in your textbook ना एक अच्छा वाला diagram मुझे नहीं मिला जहाँ पे I wanted to show. हाँ चलो हाँ यहाँ पे है. Okay, this is good enough. No, so I wanted to show you one more diagram. Let me just search where testis के अंदर का जो semivestibule rated testis से कैसे निकलता है ना उसका. Yes. Is this chapter over in school or they have just started it? Started. अच्छा ठीक है. Oh, very good. They need each school. ये वाला अच्छा. Yeah. Okay, ये अभी आएगा. Okay, so basically now, if can you see this diagram? यहाँ पे एक VS का diagram मैंने दिखाया तुम लोग को कि कैसे वो होता है testis का vertical section. ठीक है? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे अंदर you would see that basically these are the seminiferous tubule, yellow noodle Maggie के जैसे दिख रहा है तुम लोग को. So that is the seminiferous tubule. ठीक है? Seminiferous tubules are finally, they will have this vasa afferentia. यहाँ पे इन लोगों ने वो लिखा नहीं है. So vasa afferentia will then join into rete testis. तो ये जो center में आपको दिख रहा है कि जो बाहर आके join करेगा, that is the rete testis. And finally, it's going to join the epididymis. तो ये पूरा epididymis है, ऊपर का part जो है आपको ये दिख रहा है, पूरा ये जो है, all these sections that you can see, that is epididymis. You must have studied it in 10th standard also. तुम लोग को अगर याद होगा तो कि इमेच्योर सेल्स होते हैं, वो मेच्योरेशन के बाद वो एपिडिडाइमिस में रहते हैं, फिर बाद में वो ज्वाइन करते हैं वास डिफरेंस में. तो दैट इज व्हाट इट इज. तो या सो दिस बेसिकली एपिडिडाइमिस है और ये पूरा घूम के ऐसे एपिडिडाइमिस पूरा घूम के ऊपर जाने वाला है एंड इट्स बेसिकली गोइंग टू बी द वास डिफरेंस, है ना. तो ये जो आपको दिख रहा है डक्टस वास डिफरेंस, इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वास डिफरेंस. और ये वास डिफरेंस पूरा घूम के ऐसे यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से जाके it basically attaches itself to then there are certain accessory glands and ducts and all of that. क्योंकि देखो sperms है ना ऐसे अपने आप से तो नहीं जा सकते, they are motile, I agree, but they need a medium, right? So for that medium you need to move, and obviously it's going to be a liquid medium. तो वो liquid add करने के लिए बीच बीच में बहुत सारे stops है, prostate gland है, seminal vesicles है, bulbourethral gland है, ये सारी चीजें. तो वो सब मिक्स होके फाइनली एक इजैकुलेटरी फ्लूइड बनता है जो बाहर आ जाता है. ठीक है. Also I want to say that whenever when we are talking about this thing, okay, ejaculation, अभी देखो ejaculation जो है ना वो सीधा ऐसे sperm बन गया चलो ejaculate कर दिया, ऐसे नहीं होता, right? Amla said don't ruin Maggie for me. Oh sorry. Okay. Yeah. So I was saying that basically what I was saying, so ejaculation जो है it doesn't happen immediately, okay, in the sense that so let's say if a male is sexually aroused, okay, तो सबसे पहले तो सेक्सुअल अराउजल जब भी होता है तभी जो पीनिस के जो एक स्पेशल टिश्यू होता है, सो पीनिस में कोई ऐसे कार्टिलेज नहीं है, बोन नहीं है जिसकी वजह से इट इज रियली गोइंग टू बिकम हार्ड. नो, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी बोन, इट्स बिकॉज ऑफ देयर आर सर्टेन स्पेशल टिश्यूज व्हिच आर हाईली सप्लाइड विद ब्लड. ओके, सबसे ज्यादा ब्लड का सप्लाई वहां पे होता है वो ब्लड वेसल्स में जो बाजू में रहते हैं, और उसकी वजह से वी से दैट व्हेनेवर अ मेल इज अराउज्ड यू विल गेट दे गेट इरेक्शन एंड ऑल दैट. तो उसके बाद क्या होता है now so basically now that is like an indication that now this person is ready to have sexual intercourse, right? So ये जब ये sexual intercourse होना है उसके पहले फिर बहुत सारा lubrication निकलता है which is from the Cowper's gland और bulbourethral gland, और उसके बाद फिर जाके finally then the sexual intercourse starts, okay, and then it reaches a point, we call it as like an orgasm. It reaches at that point of like the ultimate pleasure or whatever that you say.
that is a point where the ejaculatory fluid will come out. Okay, so in males, it is basically at that point that the ejaculatory fluid will come out and it will go into the genital tract of the female. है ना. तो क्या होता है, obviously we will see that structure also कि penis के ऊपर एक ampulla करके एक रहता है जहाँ पे it is resting, है ना. तो directly penis में नहीं आता, एक seminal vesicle के बाजू में there is this ampulla region है जहाँ पे वो sperms रुके हुए हैं. Okay, so obviously when the erection happens and all these things start moving towards the penis, but they're having a halt. Okay, they're having like a layover, you can say, but रुके हुए हैं वहाँ पे ताकि whatever enough of lubrication, everything is happening, and finally when it reaches, so obviously everything is controlled by the nervous system, right? So once the nervous system reaches that peak point of the ultimate orgasm, whatever, that is when the autonomic nervous system will just like gush it out and the ejaculatory fluid comes out. Okay, so that's how it happens. It's not like drop by drop it comes out. It doesn't work that way. Okay. So this I just wanted to show you अंदर से testis कैसे दिखता है. Also I will just show you कि okay, यहाँ पे रहेगा, उसको दिखा देते हैं. Okay. हाँ, तो ये हम लोग ने देख लिया, रेडिक सेल देख लिया. उसके बाद अभी हम देखेंगे कि ये बाकी के जो वेसिकल्स है वो किस काम आते हैं. That also I have told. So also one more thing it is there that you should know that in males there are only 2 openings. Okay, final 2 openings है in the in the what you say posterior region. Okay, so this is anterior is your mouth, posterior is the other end. तो posterior region में 2 ही openings है. एक है the penis का opening, which is a common opening for urethra and the reproductive tract for the sperms, and one is the anus, which is nothing but the undigested waste from which it is removed out, है ना. तो अभी आप लोग सोचोगे कि अरे penis अभी एक ही opening है तो फिर कैसे चलेगा, मतलब जब भी एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी काम करना है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी काम करना है तो फिर दोनों कैसे काम करेंगे. What do you think must be there, that what gets controlled over there? What do you think happens? Digestive system का connection ही नहीं है. I'm talking about excretory system and reproductive system. So I'm talking about the urine micturition and I'm talking about ejaculation. तो micturition और ejaculation अगर है तो फिर कैसे काम करेगा. एक ही opening है ना क्योंकि दोनों के लिए. That's what I'm trying to ask. तो it's possible to get mixed also because there are no 2 different, as per my knowledge. I don't know. Okay. Any other thoughts? Anybody else? No, it's not gonna be at the same time, right? It's not gonna be at the same time. Exactly. So what happens is if there is any residual urine possible which is that there, some of हाँ, अगर residual urine है, हाँ, तो वो निकल के आएगा. Okay, sperms के पहले या तो sperms के बाद जो भी है मिक्स होके जैसे आपने बोला, तो वो होगा. बट एट द सेम टाइम ऐसे नहीं होगा कि अरे तुम्हारा यूरेटर भी यूरिन को पुश कर रहा है, इधर से वैस डिफरेंस तो सेमिनल ऐसे को पुश कर रहा है, दोनों में कंपटीशन लग गया. ऐसे नहीं होगा. ओके, दैट थैंकफुली वी हैव दैट मच ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम that at the time it's only it will give preference to one of the systems, and mostly it is. So what happens is it is like something that the urination is something that one cannot really control for a very long time. Okay, so that's the reason urination को usually पहले preference हो जाता है कभी कभी, और जिसकी वजह से it can be there, but it also depends on how much the person can hold, and all of those things की capacity कितना है, all of that. But yeah, so mostly the autonomic nervous system will give the preference to the urination part of it. Okay, is that common pathway responsible for UTI? In fact, I would say males में ना UTI बहुत कम होता है. I'll tell you why. Because penis is a lot away from their anus, है ना. First of all, उसका जो opening है वो बहुत externally it is very different, very much away from the anus.
फीमेल्स में ज्यादा होता है प्रॉब्लम, मेल्स में इतना नहीं होता, फीमेल्स में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग और एनस इसे लिटरली लाइन में एक के पीछे, राइट, और वजाइना इज इन द सेंटर, वेयर ऊपर की तरफ है यूरेथ्रा, नीचे की तरफ है एनस, राइट. Now what happens is that especially in younger girls, you know, when they are not aware and all of that, तो इसीलिए क्यों बोलते हैं कि potty training बहुत important है. और potty training से इतना नहीं होता कि अरे basically you just tell them that oh after you do potty you need to wash your bum. No, you need to teach them, and I'm really saying this, that you need to teach the girls how to really wash their bum, because it has to be washed away. Okay, you cannot push it towards the vagina, push it towards the urethra. It has to be washed away, because if you're pushing it towards it, you know, there is a chance that whatever digestive system ka jo bhi waste ka you know, whatever bacteria is there, it might infect and it might enter into the urethra, and that causes UTI. Okay, तो UTI बहुत common होता है फीमेल्स में, मेल्स में इतना common नहीं होता, unless you know if the hygiene is very very compromised and you know they are not hygienic. So yeah, UTI is basically urinary tract infection for those who got confused. ठीक है, ओके. सो नाउ लेट्स लुक एट दिस थिंग. देखते हैं कि बाकी का जो ये कैसा है. तो यहाँ पे हमने देखा था कि टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर का भी हमने देख लिया, ये स्क्रोटम है, उसके पीछे से यू कैन सी दिस इज वास्ट डिफरेंस व्हिच इज गोइंग राइट बिहाइंड. सो दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, है ना, और यूरेटर भी उधर ही आसपास ही है. और यहाँ पे आते हैं बहुत सारे दिस थिंग. अभी इसका ना आई जस्ट वांटेड टू शो फ्रंट पार्ट, सामने से बेटर लगता है. मेल एनीवे, ये वाला डायग्राम ठीक है वैसे. Alright, so fine. Here you can see now. यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी ये देखो, ये ऐसे ऊपर ऐसे लग रहा है कि अरे ऐसे ऊपर है, वो ऐसे ऊपर नहीं है. इट्स बेसिकली अ 3D स्ट्रक्चर टू शो इट इज लिटिल बिहाइंड. ओके, तो वो ऐसा है. ओके, ऐसे आया है वो, इट्स नॉट लाइक ऊपर, राइट. एनीवे, yeah, so basically this prostate gland is very nearby to the anal rectal opening जो होता है ना पीछे से, जो अब हम बोल रहे हैं कि large intestine वगैरह, वो वहां पे होता है prostate gland, just उसके आगे. Okay, alright. So here we are talking about now these glands which are there. तो यहाँ पे मैंने बताया था तुमको, अभी देखो यहाँ पे vas deferens इन लोगों ने हाँ अच्छा यही vas deferens है, ठीक है. तो यहाँ पे ना, यहाँ पे there is this ampulla which is there. Can you see this region near the seminal vesicles? ये जो दो seminal vesicles निकल रहे हैं, और वहां पे जो एक छोटा सा जो region है, that is the ampulla, जहाँ पे वो sperms थोड़ी देर तक रुक जाते हैं. And now this prostate gland and the seminal vesicles, their job is to basically make a plasma like fluid which will have a lot of fructose. Okay, तो fructose क्यों चाहिए? Why do you think there is need of fructose in that ejaculated fluid? Any idea? Nutrition to the sperms. To the sperms, है ना, because we know that they have mitochondria, so definitely they are going to need you know sperms के लिए न्यूट्रिशन लगेगा. और दूसरी चीज होती है कैल्शियम. ठीक है, अभी कैल्शियम, आई मीन वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट, बट आई कैन से दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी, है ना. अगर तुम लोग को वो लास्ट ईयर चैप्टर, वो मसल्स वाला चैप्टर तुम लोग से करवाया ही नहीं था स्कूल ने, but basically calcium is very important in you know bringing about changes in certain structures and causing motility. तो motility के लिए भी important है, sperm के लिए भी motility important है. तो fructose हो गया, calcium हो गया, and there are certain enzymes also that will help. Okay, ताकि जब भी वो जाएंगे अंदर, okay, when they will enter into the egg cell, so there are going to be certain enzymes that will break it open and allow the sperms to grow. तो वो head में रहते हैं सारे enzymes, तो वो सब करने के लिए basically it is there. Yeah, so all of this thing gets mixed up with the you know with the ejaculatory fluid. but उसके पहले ये जो bulbourethral gland है, ये छोटे जो glands आपको prostate gland से नीचे दिख रहे हैं, they are also called as Cowper's glands. So they will produce the lubricating fluid जो पहले निकलता है. Okay, after the erection you know it starts coming out just to provide lubrication. That's it. ठीक है. और ultimately फिर जैसे ही like I said, when there is an ultimate peak point that it reaches, finally the ejaculatory fluid will come gushing out. It really comes gushing out because it's important that it, so there are millions of sperms, right, and at least one has to make to the ovum. तो उसको initial वो एक acceleration मिलना बहुत important है.
है ना, तो इसीलिए इट लिटरली लाइक इट इजैकुलेट्स, इट लिटरली कम्स आउट यू नो विद अ फोर्स, सो दैट वो अंदर की तरफ बहुत जोर से जा पाए और रीच करे, अदरवाइज वो बीच में ही थक जाएगा. एंड यू नो आई विल शो यू वन वीडियो, और आई जस्ट सेंड टू यू ऑन द ग्रुप, यू कैन वॉच इट एट योर ओन टाइम बिकॉज इट्स अ प्रीटी बिग वीडियो. तो you know you will see that it is so difficult for the sperm to reach, इतने ज्यादा बीच बीच में मर जाते हैं, अटक जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है. So yeah, so this is very important, fructose, calcium and all of that. Okay, so coming to this thing, तो ये diagrammatic representation है, this we have already seen, this we have already seen. Okay, इसको एक बार देख लेते हैं. Accessory ducts का. Okay, तो seminiferous tubules open into vasa efferentia through rete-testis. तो हम लोग जो देखा था Maggie, which I have spoiled it for you. Vasa efferentia leaves the testis and open into the epididymis. Epididymis is located on the posterior surface of each testis. Okay, तो posterior surface मतलब बाहर की तरफ होता है. Epididymis leads to the vas deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. है तो उसको घुमा के ऐसे आया है vas deferens. Epididymis receives a duct from the seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculate. ये epididymis नहीं है, यहाँ पे actually vas deferens होना चाहिए था. So anyway, these ducts store and transport sperms from the testis to the outside via urethra. Urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called as urethral meatus. है ना, तो ये जो opening है वो that is called as urethral meatus, जहाँ पे वो जुड़ेगा. अभी देखो penis का भी ऐसा है that penis will you know have a specific structure like I told you. It is meant so that it can enter inside this thing. हाँ ये तो हमने already देख लिया. It is made up of special tissue which helps in erection to facilitate insemination. The enlarged end of penis, है ना, तो जो head बोलते हैं हम penis का, whatever it is there, यहाँ पे जो आपको दिखता है, it's called as glans penis, है ना. And glans penis is then covered by prepuce or foreskin, जिसको हम लोग common terms में बोलते हैं. So that is nothing but like the covering. So whenever a person gets erection, the foreskin it slides down and the glans penis comes out. It is only for the purpose so that you know that insertion inside the female genitalia is better. Otherwise it becomes very difficult, and it becomes difficult for the male also because there is not enough lubrication. तो ये वाले पार्ट में glans penis में बहुत lubrication होता है, जिसकी वजह से it is easier for a male to enter into a female. Otherwise it really hurts. Okay. Difference between vasa efferentia and vasa deferentia. Vasa efferentia, they arise from the rete testis, whereas vas deferens arises from the epididymis. They are fine convoluted ductules, vary from 15 to 20 in number. They are thick and coiled ductules, only 2 in number. दो vas deferens है. Carry spermatozoa from rete testis to epididymis, whereas they carry spermatozoa from epididymis to the ejaculatory ducts. Okay, तो ये हो गया हमारा male reproductive system के बारे में. तो इसमें सबसे important हम लोग ने यही देखा था कि basically testis is the most important part which is located outside the abdominal cavity in the scrotum. है ना, scrotum is nothing but a pouch which you know either it will come towards the abdominal cavity or lower itself to assist spermatogenesis, right? Spermatogenesis के लिए हमने देखा था कि testicular lobules के अंदर seminiferous tubules है ना, ये दो word एकदम confuse मत हो जाना. Testicular lobule, seminiferous tubule. उसके अंदर there are two types of cells. Male germ cells जो होते हैं, they are actually going to cause meiotic division, whereas Sertoli cells are just going to provide nutrition. And Leydig cells, which are present in the interstitial region, they are going to help in the production of androgens, जिसमें testosterone होते हैं और सारे भी होते हैं, you know that we will see. Finally, when we have to talk about the accessory ducts which are there, they are you know the vasa efferentia that is going to open through the rete testis, जो center वाला part था. Vasa efferentia are going to then join the epididymis. So sequence ऐसा है, rete testis, ठीक है, rete testis के बाद vasa efferentia, vasa efferentia के बाद epididymis, epididymis के बाद vas deferens. तो ये ऐसा sequence है. Epididymis leads to vas deferens and that ascends into the abdomen and loops over. ठीक है, तो ये सारा हमने देख लिया था. And then the external genitalia or penis, which is like a common opening for urine and the ejaculatory fluid. I told you it's made up of special tissue which helps in erection, right? And this erection is only and only caused because of the blood vessels and not anything else, right? The enlarged end of penis is covered by the loose folded skin, which is called as the foreskin. Okay, now there are some doubts people have asked. How does the testicular cancer affect the testes? Oh, obviously ना, अगर testicular cancer है, prostate cancer बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है. So you know ये सारी चीजें जो है ना वो बहुत कम knowledge है लोगों को, especially in India. तो
तो टेस्टिकुलर अगर कैंसर हो गया तो फिर ऑब्वियसली द पर्सन most of the time what they do is if it is a benign thing they just remove whatever the tumor is there, और कभी कभी पूरा testis निकाल देते हैं. At the most क्या हो जाएगा, that person will not be able to reproduce, that's it. But if it is a malignant tumor, then they need to take care that it is not spreading in the other parts of the body. So yeah, it's as good as like a normal cancer only. It's it's the same way. Will a circumcised penis also produce lubrications on the glans penis? Yes, of course it is. Yes. It does. Obviously, circumcised penis is nothing but basically they sometimes what happens is in some males foreskin जो होता है it is little tight. Okay, तो वो नीचे slide नहीं होता, तो उसको एक छोटा सा circumcision करना पड़ता है जिससे वो slide हो जाएगा. तो एक बार वो slide होने लगा तो there are certain exercises, there are certain lotions and all that person initially needs to use, but over a period of time it will get normalized. Okay, so it will produce the lubrication the way it is required. Yeah. Any other doubts in male reproductive system? Girls should ask me a lot of doubts because males को तो doubts ठीक है, मतलब उनके तो ये है, but you should also have certain doubts and ask me about male reproductive system. Any doubts, anybody? Okay. What if the foreskin is removed completely? Completely तो remove ऐसे पूरा उसको ऐसे जैसे रैपर निकाला वैसे नहीं निकाल सकते, उसको circumcise करना ही पड़ता है. अगर पूरा निकाल दिया तो yes, it will definitely affect. It becomes extra sensitive. The penis region becomes very sensitive. Yeah, but it's a very general operation. बहुत सारे लोग करते हैं. Dangers of non-circumcised penis can be basically it basically what I mean, it's common sense, right? कि हमने क्या देखा था, glans penis का importance क्या है, head of the penis का importance क्या है, ताकि वो it can enter into the vagina without causing any without with a lot of lubrication. ठीक है, अगर वो circumcise नहीं किया है तो whatever lubrication is there, it will be dependent only on the vaginal side. See, because vagina also produces a lot of lot of lubrication. By the way, ऐसे नहीं कि सिर्फ males को खुद का lubrication देखना है, females also produce a lot of lubrication when the sexual intercourse happens, so that will help. तो अगर non circumcised भी penis है तो उसका ऐसे कुछ problem है नहीं. It's just that it is a little it's a discomfort for the male sometimes. Okay, it can be a problem especially if they are using a protection like a condom. तो condom पहनने के बाद कभी-कभी it might hurt. Okay, because like I said, there is not enough lubrication. That's the whole game is only about lubrication. अगर वो hurting है तो फिर problem, but otherwise sperm production में, उसके efficiency में कुछ problem नहीं होगा. Next question is by Jasleen. What happens in erectile dysfunction? Erectile dysfunction में बहुत अलग-अलग चीजें होती हैं, especially जब भी the tissues which I'm talking about, which are present around the penis, they are not able to get enough of blood supply, or probably they are not strong enough. The muscular tissue is not strong enough to become erect. तो उससे क्या होता है, even if the person is getting aroused or sexually aroused, the blood supply is not enough ताकि वो उसको erection ही नहीं हो रहा है. तो इसलिए ये जो Viagra के pills वगैरह होते हैं, I'll just tell you that how Viagra works. My search history is going to be awesome today. I should have done it in incognito. Yeah, so basically this is what it is. अगर उन detail में देखना, it is sildenafil citrate करके it's basically that thing. So Viagra works for men with erectile dysfunction by increasing the blood flow to the penis, so you can keep an erection hard enough for the sex. Individual results may vary. Okay, so basically it's all about the blood flow जो होता है, इसका actual chemical कैसे काम करता है वगैरह वो हमको फिर बाद में देखना पड़ेगा. I can just send you probably certain links that will show you कि chemical level पे क्या होता है exactly, कैसे वो इंक्रीज करता है ब्लड फ्लो का एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, सी बट वाइग्रा का बहुत प्रॉब्लम है बिकॉज सी इन जनरल इट्स गोइंग टू इंक्रीज ब्लड फ्लो, राइट? तो ब्लड फ्लो अगर होने वाला है तो ब्लड फ्लो बाकी जगह पे होगा, तुम्हारे बॉडी में भी होगा, तो बहुत बार हेडेक्स होते हैं लोगों को आफ्टर टेकिंग वाइग्रा, और समटाइम्स दे एक्सपीरियंस हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें होती हैं.
Yeah, exactly. It was originally designed for migraines. You're right. है ना? Because it was not really for this purpose. It was like a side effect which was observed for the people who are taking this medication, and now it has been used for erectile dysfunction. Okay. Any other doubts? Anyone? Should we proceed to the females, the ladies? Can stress cause erectile dysfunction? Not really. Not really. It cannot cause erectile dysfunction. It might cause certain problems in the sperm production in itself. Okay. जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं या तो फिर जनरल टेस्टोस्टेरॉन जो प्रोड्यूस होगा वो अफेक्ट कर सकता है, बिकॉज देखो टेस्टोस्टेरॉन किससे होने वाला है, तुम्हारे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है वो, और एंडोक्राइन सिस्टम इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू योर नर्वस सिस्टम, है ना, तो वो भी हो सकता है. व्हाट आर द रीजंस फॉर लो स्पर्म काउंट? या सो बेसिकली लो स्पर्म काउंट इज अ प्रॉब्लम इन द मेल जर्म सेल्स ओनली ना, तो जर्म सेल्स की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है, या तो फिर उसको इनफ न्यूट्रिशन भी नहीं मिल रहा है, तो एवरीथिंग इज अ प्रॉब्लम इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अगर प्रॉब्लम है तो फिर हर एक इसमें से जो भी स्पर्म्स निकल रहे हैं वो उनका काउंट कम होगा, है ना. एंड नॉट ओनली स्पर्म काउंट, दे नीड टू बी गुड स्विमर्स. ओके, द स्पर्म नीड टू बी गुड स्विमर्स आल्सो. नहीं तो कभी कभी क्या आता है, स्पर्म काउंट ठीक होता है बट दे आर नॉट गुड स्विमर्स, बिकॉज नाउ आई विल जस्ट सेंड यू वन वीडियो लेटर ऑन कि कितना उनको स्विम करना पड़ता है. ओके, स्पर्म्स रियली नीड टू स्विम लाइक दे हैव टू बी लाइक दिस माइकल फेल्प्स, राइट, who would like swim and go through and all of that, और बहुत सारे ऐसे उसमें बीच बीच में क्या बोलते हैं hurdles आते हैं. So yeah, so that can also be a result of not fertilization. Any more doubts? Good, I'm happy at least you guys are asking all these doubts because this is important. Okay, so obviously you can come up with doubts later also at the end of the session. अभी जल्दी इसको खत्म कर देते हैं, फीमेल के reproductive system को खत्म करते हैं, because it's very important again knowing the female reproductive system. Okay, so female reproductive system में हमने देखा था it's going to be ovary, है ना, ovaries होते हैं दो, उसके बाद ओविडक्ट होगा, ओविडक्ट या तो फिर उसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूटेरस, सर्विक्स एंड ऑल ऑफ दैट. लेट मी जस्ट गो डायरेक्टली टू the concept. Okay, so the reproductive system is pair of ovaries, pair of oviducts or fallopian tubes, uterus, cervix, vagina and external genitalia. Okay, तो ovaries जैसे आपके sperms है वैसे ही females में ovaries होते हैं. They are the primary sex organs. Okay, one on each side of the lower abdomen and they are going to be connected with the pelvic wall, है ना. तो थोड़ा lower abdomen में pelvic region के वहाँ पे connected होता है, इसीलिए वो periods में क्यों females इतना pain experience करते हैं, because it's in the pelvic wall, lower abdomen, और बहुत पेन होता है कोई लोगों को, and it's totally understandable because the whole of your reproductive system is in the lower abdomen. Each ovary is 2 to 4 centimeter in length. तो normally जो ovaries होते हैं वो 2 to 4 centimeters के होते हैं, but अगर किसी को PCOD है, I don't know if you've heard of it. Have you heard of what is PCOD? Can anybody tell me what is PCOD? It's very common in Indian women actually. It's common everywhere. Disorder. It's common everywhere in the world, I would say. In fact, even in America, 1 in every 5 women, or 1 in every 4 actually, अभी ज़्यादा हो गया, 1 in every 4 women has PCOD, which is polycystic ovarian disease या तो फिर polycystic ovarian syndrome जो होता है. Syndrome is nothing but बहुत सारे और भी उसके साथ कुछ निकलते हैं problems, जैसे कि thyroid issue हो सकता है उसके साथ, hirsutism हो सकता है. Hirsutism is nothing but growth of abnormal hair on face and chest and all of that. फिर उसके बाद प्री डायबिटिक कंडीशन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो बहुत सारी चीजें उसके साथ आ जाती हैं. सो व्हाट हैपेंस इज, नाउ ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मेंस्ट्रुएशन इन डिटेल, बट अगर एक बेसिक नॉलेज अगर मैं आपको बता दूंगी, तो वी नो दैट एवरी मंथ दैट एग इज गोइंग टू गेट रिलीज थ्रू दीज ओवरीज, राइट. तो वो जब भी एग रिलीज होता है तो वो बाहर आना जरूरी है. इट लिटरली नीड्स टू बी पॉप्ड आउट ऑफ दैट ओवरी एंड देन द एग सेल इज पिक्ड अप बाय द फिम्ब्रिया इनटू द इन्फंडिबुलम, और उसके बाद आगे का उसका जो भी जर्नी, राइट. बट कभी भी क्या आता है, ये पॉप नहीं होता. तो जब भी वो पॉप नहीं होता तो वो उधर ही चिपका रहता है. तो फिर वो महीने पीरियड्स नहीं आए वो फीमेल को, फिर और एक महीना चला गया उसमें, तो और भी वापस नेक्स्ट टाइम भी पॉप नहीं होता, और एक ऐसे ऐसे करते हैं वो छोटे छोटे लिटरली
you can say they like it becomes really pimply inside that ovary. So that is like a polycystic ovarian syndrome, and there is no specific cause. देखा जाए तो लोग बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि maybe it's a lifestyle disease. Some people say it is genetic. Some people say it is because of some already predisposition अगर आपको है, या तो फिर pre-existing कोई condition है, या somebody is overweight तो उसकी वजह से होता है. So yeah, so there are many such these things, but there is no one conclusive cause कि ऐसे क्यों होता है. इसलिए उसका कोई cure भी नहीं है. You can just control PCOD, you cannot really cure it completely. Yeah. Can it block the opening for the release of ova? Yes, that's what. So PCOD के जो females होते हैं, it's very difficult for them to get pregnant because now it might just block for the further release of ova. Basically, it disturbs the whole menstruation cycle. It can be it's like cause and effect relationship. It's like a vicious cycle. कि जिसकी वजह से वो रिलीज नहीं हो रहा है, वही वापस उसको इफेक्ट करता है, फिर वही नहीं होगा, and it just goes on in circles, right? All right. Yeah, so but anyway, that's like a abnormality. Let's talk about the normal thing. What happens? So 2 to 4 सेंटीमीटर का होता है. अगर PCOD किसी को है तो बल्की हो जाते हैं, ओवरीज बल्की हो जाते हैं, 2 to 4 सेंटीमीटर से बड़े हो जाते हैं. Okay. Functions are produce ovum and several steroid hormones. तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन वगैरह. Each ovary is covered by a thin epithelium covering the ovarian stroma. Okay, तो यहाँ पे भी stroma है, stroma में भी peripheral cortex, medulla, सब जगह पे अंदर बाहर जो भी चीजें उसको cortex medulla हम लोग बोलेंगे. और जो ओवरी के अंदर जो भी थोड़ा थोड़ा लिक्विड है, इसको 2 टाइप के लिक्विड्स है, एक पेरिफेरल फ्लूइड है और अंदर वाला मेडुला फ्लूइड है. और the whole thing is covered by a thin epithelium ताकि वो बाहर आसानी से वो ओवम आ जाए. Okay. After that, once it gets released, then there are these fallopian tubes. अभी यहाँ पे एक अच्छा वाला डायग्राम दिखाते हैं. How Google is so smart. Yeah, can you guys see this, or it is a little smaller one? दिख रहा है क्या? Because this is a good diagram. Can you guys see this diagram? Yeah. Okay. Alright. या सो अभी देखो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या है इसका स्ट्रक्चर. तो देखो यहाँ पे ओवरीज है, ठीक है, और ये पेल्विक वॉल से अटैच्ड है थ्रू द लिगामेंट्स. एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ये जो है द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर द फिम्ब्रिए, और फिम्ब्रिए के ऊपर ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज इनफंडिबुलम. ओके, सो कभी भी यहाँ से जब भी एग निकलेगा ओवरी में से, ऑल्टरनेटिवली निकलता है, तो यहाँ से निकलने के बाद फिर ये फिम्ब्रिए उसको पिकअप कर लेगा. ओके, इट लिटरली पिक्स इट अप, द गुड वन. तो कभी कभी ना प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte जैसे निकलते हैं. प्राइमरी जो बड़ा वाला रहता है वो उसको पिकअप करना है, कभी कभी गलती से. तो दैट्स द प्रॉब्लम समटाइम्स हैपेंस कि छोटा वाला जो है वो पिकअप हो जाता है. सो इट्स नॉट लाइक अ वेरी वेल डेवलप्ड थिंग. और फिर वो अगर उसका अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आते हैं. Another thing is that now see ovary, when a baby girl is born, okay, that time the ovary will have millions of these chotu egg cells which are there. Now as and when they grow up, by the time it's puberty, when they reach puberty, wo millions mein se collectively you would find somewhere around 400 to 500 cells. Okay, that means once now they have hit the puberty, now they've got menarche, तो फिर every month वो 400 में से एक आते रहेगा और उसका चलते रहेगा जो भी है उसका development and all that. Now what happens is sometimes, okay, when in the older females, ये वाला जो पार्ट है ना, फिम्ब्रिए वाला, इनफंडिबुलम वाला जो पार्ट है वो थोड़ा वीक हो जाता है. ओके, तो और सेल्स भी वीक है, सेल्स भी ओल्ड है, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो सेल है वो यहाँ पे ही रह जाता है. इट जस्ट लाइक रिमेन्स हियर ओनली, इट डजंट गेट पिक्ड अप. नाउ द स्पर्म तो पूरे जोश में, तो स्पर्म पूरा आएगा इधर तक, पूरा तुम्हारा एम्प्यूला तक, इधर पूरा फिम्ब्रिए तक, और बाहर निकल आएगा. Now the sperm is going to come outside because see, this is an opening, right? It's like it has those curtains of the fimbriae, but it can come outside.
and now the sperm is coming outside and it is going to fertilize the egg cell which is here outside. This is called as ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy मतलब जो यूटरस के बाहर जिसका प्रेगनेंसी हो रहा है या तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहर उसका प्रेगनेंसी हो रहा है, तो उसको हम लोग ectopic pregnancy बोलते हैं. यूजुअली it's very common in the older females. Very very complicated situation it is. Sometimes it also happens in the fallopian tube में ही growth gestation चालू हो जाता है. That is tubal pregnancy, है ना. ट्यूबल प्रेगनेंसी में क्या होता है, इधर ही चालू हो गया, मतलब नीचे आना चाहिए था इम्प्लांटेशन के लिए, इधर ही ग्रो होना चालू हो गया. दैट इज आल्सो अनदर प्रॉब्लम. इट विल जस्ट ब्रेक. ओके, द फैलोपियन ट्यूब विल जस्ट ब्रेक एंड ऑब्वियसली इट इज वेरी पेनफुल फॉर द लेडी आल्सो. तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये सिस्टम की उसका परफेक्ट होना. इट्स सच अ दिस थिंग a very important stage. Every stage is so important. Okay. ये हो गया. फिर इसके बाद आता है, अभी यहाँ पे आप देखोगे इनफंडिबुलम मैंने बोला फनल लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ पे जो है एम्प्यूला, मोस्टली एम्प्यूला में आपका फर्टिलाइजेशन होता है. once the fertilization happens, this is the isthmus. Isthmus is going to join your fallopian tube or oviduct जिसको हम बोलते हैं to the uterus. So uterus is nothing but this inverted pear shaped organ, muscular organ. 3 layers होते हैं उसमें. अंदर एंडोमेट्रियम जो सबसे अंदर होता है, which is the glandular layer. और उसमें से बेसिकली इट चेंजेस इटसेल्फ इन अ साइक्लिक फॉर्म. तो जब भी एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन होता है तो यहाँ से ये जो एंडोमेट्रियम का लेयर है वो निकल जाएगा. और वो कैसे निकलेगा, ऑब्वियसली वी विल सी इन डिटेल अबाउट इट, बट टेक्निकली इट डिपेंड्स ऑन द लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन. तो ईस्ट्रोजन इज द वन दैट इज होल्डिंग इट. जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया उसका होल्ड छूट जाएगा और वो एंडोमेट्रियम निकल के बाहर आ जाएगा. दैट्स व्हाट इट मींस, राइट. Myometrium is a thicker layer which is in the center, middle layer, and this is the one that is going to go into labor. तो जब भी हम बोलते हैं ना कि uterine contractions जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, it is because of the myometrium. Perimetrium is just like the outer thin layer which is there for protection. इसका कुछ major वैसे ये नहीं है, but जो myometrium है which is the contracting or this thing for labor, and endometrium इसके काम आएगा कि अगर implantation हो जाता है तो इनिशियल स्टेजेस में जो भी उसको अटैचमेंट और न्यूट्रिशन वगैरह की जो जरूरत होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द एंडोमेट्रियम. ओके, सो इट इज हाईली सप्लाइड विद ब्लड एंड यू कैन सी हियर आल्सो इट इज लाइक फोल्डेड स्ट्रक्चर पूरा ऐसे. इट्स ऑल अबाउट इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, राइट. तो यहाँ पे भी सरफेस एरिया वो बढ़ा रहा है ताकि उसको मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिल सके. ओके, ऑलराइट. Then once the uterus यहाँ पे आ जाता है, then finally this region just above the vagina is called as cervix. Cervix is nothing but it's the region जहाँ से dilation होता है cervix का, और वहां से बच्चा the head comes out first, and at the same time even when we are talking about the sexual intercourse, तो cervix के through जो भी sperms, most of the sperms जो pass हो जाएंगे वही they will ultimately make a head. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जो स्पर्म्स होते हैं वो सर्विक्स से बाहर ही निकल जाता है पूरा फ्लूइड. जो थोड़ा बहुत फ्लूइड जो पहुंचता है, इट्स सो दैट ओनली इट कैन क्रॉस द सर्वाइकल दिस थिंग, सो सर्वाइकल कैनाल, एंड फाइनली इट्स द वजाइना. सो दैट्स हाउ दिस होल दिस थिंग इज वेरी, देखा जाए तो बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिखता है, और इसका जो वर्किंग है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इन द सेंस कि सब कुछ इट हैज टू बी टू द टी एंड ऑल ऑफ दैट. ओके, सो दिस वी हैव सीन. Yeah, so all of the uterus I told you. Now you're going to see the external genitalia कैसा है. External genitalia, I'll just show you the structure. Second. All right. So
this is the external genitalia of the females. Now you can see here very clearly this part, the upper part is called as mons pubis. So basically this is the part jahan pe there is a lot of fatty tissue, and the pubic hair in females is in this part. Okay. Then clitoris जो है, clitoris is it's very similar to what is there in males. Penis जो males में होता है, जैसे clitoris is present in the females. Males में जब भी वो growth होता है, okay, whenever the baby is a male baby is developing, तभी वो जो penis बनता है. Similarly जब भी females का जो होता है ना, एकदम सिमिलर उनका ग्रोथ स्टेजेस है. इट्स ओनली दैट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो मेल है तो वो पूरा डेवलप होगा, फीमेल है तो वो रुक जाएगा और उसके बाकी के ऑर्गन्स डेवलप होने लगेंगे. तो ग्लैंड क्लिटोरिस एंड क्लिटोरिस इज एक्चुअली लाइक अ reduced penis which is there. Now this is a very interesting observation that it shows that probably I don't know if we can call it a vestigial organ or something like that. जब भी actually divide हुआ रहेगा, it's kind of like an evolutionary evidence that we can say कि यहाँ पे जो clitoris है is very similar to the male penis which is there. So yeah, that's what it means. उसके बाद यहाँ के अंदर तो this whole thing is basically the vulva that we call it. और बाहर का जो part है it is called as labia majora और अंदर का is labia minora. और अंदर है urethral opening, then this is the vaginal opening और anus is यहाँ पे नीचे. Okay, तो यहाँ पे एक hymen करके एक एक covering होता है जो people think that oh it's a sign of virginity and all of that, but actually it's not, because बहुत बार ऐसे भी होता है कि अगर आप rigorous exercise कर रहे हो या तो फिर people do this dance and splits and all of that, any kind of an athletic exercise if it is there, that can also rupture the hymen. Okay, so usually people think अरे hymen जब भी rupture होता है तो बहुत bleeding होता है वगैरह, ऐसे कुछ नहीं होता, थोड़ा सा bleeding होता है कभी कभी ऐसे भी होता है कि without breaking the hymen still the person can have sexual intercourse without causing any harm to it. Okay, throughout the life that hymen remains अगर वो छोटा है तो. So yeah, that's what it is. And in fact nowadays people have started observing that hymen का जो size है वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है. So probably with the evolution it might just not be present anymore, right? So that's also another this thing. Yeah. So clitoris is the part, it's often used for, sexual stimulation also, either while, having sexual intercourse or even while masturbation, all of that. So, that is something which is present in the females, which is very similar to this thing. So, वहाँ पे भी blood supply ज़्यादा हो जाता है. And so this is the vaginal opening, which is between the anus and the urethra. Okay. See, I'll tell you why this is important, because, it's so strange. And, I'll tell you this, that there was this one particular couple that we were I was discussing with my friend, and so they were not really from a poor economic background, but हाँ उनको थोड़ा knowledge नहीं था ज़्यादा इस चीज का, and they had come with a complaint that the female was not getting pregnant. Okay, they checked everything, like all the reports, all उसका sperm count check किया, इसका पूरा cycle check किया, सब कुछ किया, ये किया वो किया, and then the doctor was like not understanding कि क्यों नहीं हो रहा है. So obviously they also said कि पूरा prepare किया, तो there's like this particular timetable, literally the doctor will give you a timetable that when you should have sex and all that. So they give you a timetable, okay, these are your fertile days, this is something that you should do, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ऐसे सब पूरा तुमको पूरा schedule बना के देते हैं ताकि it increases your chance of conceiving. Still it was not happening, and then the doctor was like, I need to talk to you separately, and I just want to know that what it is. And then it came out that the male was not even aware that this is the urethral opening and this is the vaginal opening, and he had been inserting his penis into the urethral opening. And when and obviously अभी unfortunately ऐसा था वो female में कि उसका urethral opening भी बड़ा था. Okay, naturally थोड़ा सा बड़ा था, तो probably when he was able to do that, and then the doctor got so shocked, how people are not aware of these things, because it's a serious condition, right? I mean, she could have experienced so much of pain. I'm sure she must be experiencing so much of pain, and this guy was not aware, she was not aware, and obviously since it was very nearby to the clitoris, she must be having that arousal and all of that, so she was not able to understand ki kya hai. This sexual education is so important because now people don't know that what is the urethral opening, where is the vaginal opening, where is the anal opening, and all of that. Yeah. So yeah, that's that's the external genitalia of females. Let's go over it once more.
Okay, so mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. Labia majora, it's a fleshy folds of tissues extending from the mons pubis and surrounding the vaginal opening. Um, labia minora is the paired folds of tissues under the labia majora. Opening of the vagina is often covered by a membrane called as hymen. Okay, hymen is often torn during the first intercourse, but obviously it's not necessary every time it will be. Clitoris is like a finger-like structure at the upper junction of labia minora above the urethral opening. Okay, so this is about the primary sexual reproductive system, obviously, which is present in the females. Any doubts? You can ask me now. Follow. ओके फंक्शन ऑफ हाइमेन वैसे तो फंक्शन हाइमेन का कुछ वैसे है नहीं देखा जाए तो इट इज बेसिकली जस्ट टू प्रोटेक्ट the vaginal opening especially in the younger females that's what it is because अगर कोई जैसे मैंने आपको बोला था ना कि UTI होता है and all of that तो उसके लिए Ma'am, how does period blood pass through hymen? That's what I said. No, hymen is not like it's totally closing the door, right? It is just like a small opening which is there, small flap which is there. तो naturally अगर वो flap थोड़ा नीचे तो ऊपर का तुम्हारा opening ठीक है, तो वहां से blood आ सकता है, right? वहां से इनफैक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो सकता है बट अगर वो हाइमन थोड़ा बड़ा है तो वो टेयर हो जाता है दैट्स द ओनली थिंग ओके सो टेक्निकली उसका कोई फंक्शन है नहीं देखा जाए तो हाइमन का कोई फंक्शन नहीं है it's actually as good as the vestigial organ a vestigial part yeah any other doubt ठीक है cool so let's proceed further अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो नेक्स्ट आर द मैमरी ग्लैंड्स है ना अभी मैमरी ग्लैंड्स में क्या होता है these are nothing but the breasts that we are referring to or obviously now because of the milk production that will happen just after the delivery है ना तो उसकी वजह से these are the most important parts क्योंकि उसमें से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा बेबी को उसको and it's so interesting so there is one thing that I don't know if you're aware of कि कभी कभी क्या होता है whenever the mother is going to feed the baby है ना now अगर कोई बेबी को कोई इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली उसमें तो कुछ कुछ एंटीबॉडीज वगैरह है ही बट अगर मान लो बेबी को कोई इन्फेक्शन है तो व्हेनेवर दैट बेबी इज ड्रिंकिंग मिल्क ओके व्हेन ही इज सकलिंग ऑन द मदर्स ब्रेस्ट तो ऐसे हो जाता है कि जो थ्रू द सलाइवा व्हाटएवर इन्फेक्शन या जो भी है दैट आल्सो गेट्स पास्ड ऑन इनटू द मदर है ना तो फिर मदर की बॉडी आइडेंटिफाई करती है कि ये कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके हिसाब से वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और थ्रू मिल्क their antibodies are again produced and they're given to the baby and that's how this whole thing works right because most of the times it so happens कि इतने सारे infections होते हैं बच्चों में that we are not even aware about but through the baby's this thing interaction with the mother's breast and through the milk that it is taking it's not just about the nutrition it's also a lot about the immunity that they get yeah so IgA antibodies जो होते हैं milk में it's actually they are very important for the immunity yeah okay so let's talk about mammary glands so they are paired structures contain glandular tissue and glandular tissue is divided into 15 to 20 mammary lobes they are containing alveoli ये नाम तो तुमने पहले भी सुना हुआ ही है तो जो basically they are like small air sacs which are there but these alveoli cells alveoli का जनरली मतलब होता है कि bags छोटे छोटे bags okay they secrete milk and they're stored in the lumen of alveoli तो वहां से जाके फिर वो lactiferous ducts में जाने वाले हैं so this is the sequence तो सबसे पहले होता है ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से 20 मैमरी लोब्स होते हैं ये एल्वियोलाई ओपन होते हैं मैमरी ट्यूब्यूल्स में ट्यूब्यूल्स ज्वाइन करेंगे मैमरी डक्ट के पास डक्ट में मैमरी एम्प्यूला जो है वहां पे लैक्टिफेरस डक्ट होता है तो लैक्टिफेरस डक्ट से फाइनली मिल्क निकलेगा सो यू कैन सी इट ओवर हियर कैन आई शो इट टू यू yeah
So this is the picture where you would see that so the fat tissue, it depends from person to person, right? But finally ये जो lactiferous जो ducts है वो बाहर निकलते हैं nipple से, and there from where the baby can suckle out milk, है ना? So and like I told you now, the importance of क्यों doctors इतना insist करते हैं that mother should feed the baby and all of that, because this is important, right? There is a whole this thing, a whole lot of science behind it. It's not just the attachment to the baby and all of that. It's basically for the immunity of the baby, for the growth of the infant. Okay. So this is about the female reproductive system, which includes the whole of the primary reproductive system and also the mammary glands. In males, we have seen the male reproductive system. Any doubts, anybody? इसको कुछ doubt है? इसका किया था. Okay. किसी को डाउट है कुछ? तो इसका आई थिंक इसका क्विजलेट है, तो उसका क्विजलेट कर लेना. एक सेकंड. तुम लोग डाउट्स डालते रहो, आई जस्ट आंसर इन. Okay, what is the function of areola? Areola का function basically होता है to just wear and tear of the nipple region of the breast, because क्या होता है, this is the region where a lot of the infant is going to take milk from there, तो कभी कभी lubrication का problem होता है, it hurts the mother, तो उसका wear and tear करने के लिए, उसको repair करने के लिए is the function of the areola tissue. So areola is nothing but the surrounding region. Nipple is just like the pointy thing which is there. And areola is the surrounding darker region that we call, that's the areola. Okay. तो ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो एकदम सेंटर में है वो निपल है, which is the opening. उसके आजू बाजू वाला जो पार्ट है, that is the areola. So it's nothing but like a repair system which is there. Why do men still have nipples? Now that's an interesting thing, because we belong to the category of mammalia ना. तो mammalia का वो एक क्या बोलते हैं, एक characteristic है which is which is to have mammary glands. अभी तक वो क्यों है, I mean I don't know, I still have to search कि उसका क्या है. Why do men? चलो अभी देख लेते हैं क्या है. Because as far as I know, and I think it is basically because since we still belong to the class of the mammalia, and that is like one of the structure, even though we are not producing milk, I mean men are not producing milk, it's still there. Okay. Why do men have breast milk? Bad idea. Should have gone to the web. Men have nipples because nipples develop in the womb before embryos become distinct male or female. So by the time a Y chromosome kicks in to distinguish a fetus as male, the nipples have already secured their place. So I told you ना, it's all about evolution ना. अभी तक हम लोग mammalia में है ना, तो वो उसका characteristic है. So yeah, that's why. So is it possible for them to become vestigial? Yes, definitely. अगर development में कुछ change हो गया, जैसे यहाँ पे बोला ना, that before the Y chromosome gets expressed, if they are not being developed, तो वो हो जाएगा. Yeah, Aryan, you're right. So he says maybe it's just like the during gestation, the clitoris is small underdeveloped penis. So during gestation, before the sex is determined, the nipples already develop. Yeah, absolutely. So that's what so this whole process, abhi jabi, I don't know how much in detail that we will be allowed to go in the NCRT. Let me check. It's very interesting the way how the chromosomes get expressed, how your genes get expressed, और पूरा जो gestation का process है ना, वो इतना interesting है. If you study keeping the references of genetics or keeping the references of how the DNA is getting expressed at every stage, okay, it's mind blowing. Yeah.
Anything else? Any other doubt? All right. So I don't think so you guys have any more doubts now. So what I want you to do is I want you to make notes. Okay, I will just send what notes I have made. उससे better तुमको थोड़े notes बनाने हैं, तो तुम्हारे textbook को थोड़ा refer करके notes बनाओ. Okay, और you just have to make the notes for male reproductive, female reproductive system. सारे उनके जो भी नाम है ये है उसको point form में लिखना है. Use your own kind of this thing to make your own notes कि कैसे हो गया. अगर आपको table बनाना है तो table बनाओ. अगर आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना है तो पॉइंट फॉर्म में लिखो. बट एट द एंड ऑफ द डे टुडे और मैक्स बाय टुमारो आफ्टरनून आई वांट द नोट्स टू बी सबमिटेड. I will either you can submit it on the group or I think I'll just create a link where you can upload it on the form. Okay, we are not using Shobi anymore, so I'll be creating a form where you can upload it. ठीक है, या तो फिर सीधा PDF निकाल के अपने ग्रुप पे भेज दो तभी चलेगा. That's also fine. Fine, okay. So I think so far this chapter is very good, and I hope you have understood the concept. If you have any doubts, you are free to ask me on our unofficial group also or personally, because this is not just for today's chapter. I'm just saying, reproduction से related और भी chapters हैं, तो उसमें अगर कोई doubts है तो please पूछ लेना. Don't go with wrong information because it's so important to have the correct information. Okay, fine. Bye guys. Have a nice weekend. Chill, थोड़ा अच्छा chill भी करो और पढ़ाई भी करो. Okay. चलो बाय. रिया, यू मस्ट हैव मिस्ड अ लिटिल बिट. मैं एक लिंक भेज दूंगी तुमको, उसको देख लेना स्टार्टिंग का. ठीक है, सो दैट